out of which 34 elected. Next, Legislative Assembly, 144 members, 104 elected, rest official and nominated. This was change in the legislative structure. Pardon? प्रिंसली स्टेट्स के काउंसिल ऑफ स्टेट्स में, इसी में तो है, 2 हाउस हो गए ना. असेंबली में तो ब्रिटिश प्रोविंसेस हैं. यस. अब आई विल टेल. या complete popular control in the sense people will elect the members and ministers will be responsible, collective responsibility, cabinet form of government. Okay. Member of princely states are nominated. Council of states तो वैसे भी elected नहीं है, तो but they have elected members also. Council of states. अब ये हो सकता है दे मस्ट बी इनडायरेक्टली इलेक्टेड. आई विल सी एंड कंफर्म. अब इतना क्या princely states will be nominated members or there will be some. I will see the breakup. No need. You just remember this much: 2 houses, Council of State and Legislative Assembly, and in both elected members, and I think elected members in majority. Okay, that's all. So no need to remember the number and all. From where elected, we'll just find it out and tell you. So now, this is first part. This was a change in legislature. Second thing was अब इससे सेंटर में भी अनऑफिशियल मेजॉरिटी हो गई. दोनों में ही who are in majority elected members. Is this fine? Okay. So somebody was asking the powers. So powers to ask questions, raised resolutions, everything was already there. ठीक है? By 1909. Now no popular government at the union, so government could not present the budget. So as far as the powers of the legislature is concerned, whatever was there in 1909 remains. You have understood this? Because by 1909 almost all powers were devolved. Which power is remaining now? To make laws. Nothing like that was introduced at the union level. ठीक है? तो this was the change in the legislature. Is this clear? Now at union level you write change in the executive. Change at the executive level. Right, Indians were associated in the Viceroy's Executive Council,
right? 3/6 members, 3/6 members were now to be Indian, excluding commander in chief. तो वाइसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कमांडर इन चीफ हटा के टोटल मेंबर्स में 3/6 members will be Indians. I don't know why 3/6. They could have done 1/2 also. ठीक है, ठीक है, हाँ? Out of 6. Yeah, out of 6, 3 will be Indians, excluding commander in chief. Now write the main thing: no responsible government at the center. No responsible government at the center. No responsible government at the center. No बस legislature थे. Now you write changes at the provincial level. Changes at the provincial level. मैम एट एग्जीक्यूटिव लेवल मतलब गवर्नर की एग्जीक्यूटिव काउंसिल, एक एग्जीक्यूटिव हो गई और दूसरा लेजिस्लेचर हो गया. तो लेजिस्लेचर अप टिल नाउ वाज यूनिकैमरल, नाउ इट बिकेम बाइकैमरल. और इन गवर्नर्स एग्जीक्यूटिव काउंसिल नाउ हाफ ऑफ द मेंबर्स विल बी इंडियंस. ठीक है. मैम रिस्पॉन्सिबल रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट मतलब लेजिस्लेचर में लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्ट्स और गवर्नमेंट शुड हैव बीन फॉर्म्ड आउट ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एंड गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल टू द असेंबली. वैसा कुछ नहीं था, सिर्फ लेजिस्लेचर है. गवर्नमेंट कंप्लीटली किसके पास है? वाइसरॉय. ठीक है. अब नाउ चेंजेस एट द प्रोविंशियल लेवल. हियर यू राइट introduction of diarchy. Right, for the first time the subjects were divided into central subjects and provincial subjects. ठीक है. Now write provincial subjects. Next, provincial subjects were divided into first reserved subjects, यहाँ पर ब्रैकेट में लिखो पावर टू लेजिस्लेट lies with the governor and his executive council. His executive council. अब फिर लिखो important subjects were reserved. Important subjects were reserved. Now provincial subjects, sorry, transferred subjects, right, where the power to make law lies with governor. Governor province में with governor
acting, sorry, with governor, comma, who will, acting on the aid and advice of, acting on the aid and advice of the ministers. Full stop, right? Ministers were to be chosen from among the elected members. Right, right. This was, अब ये तो फीचर्स हो गए, ठीक है. नाउ जस्ट राइट एनालाइजिंग द नेचर ऑफ द चेंजेस, एनालाइजिंग द नेचर ऑफ द चेंजेस. कौन से मेंबर्स को नॉमिनेट? सेंटर तो यूनियन गवर्नमेंट नॉमिनेट ही करेगी हमेशा. जैसे अभी राज्यसभा में कौन नॉमिनेट करता है? प्रेसिडेंट. तो नॉमिनेशन सेंटर में वही करेंगे, ठीक है. तो नाउ एनालाइजिंग द चेंजेस. कहाँ पे? वाइसरॉय करेगा ना, गवर्नमेंट एट द सेंटर. क्या? ऐसा कुछ नहीं है. एनीबडी. Gradually they will see the experience at the state level, and then they will never give all concessions in a single go. तो कह रहे ना हम कर रहे हैं, कल आना, ठीक है. पहले ये काम करके दिखाओ, कर आना, ठीक है. अब तो रिफॉर्म कर तो रहे हैं प्रोविंशियल लेवल पर. तो एक स्कॉलर है, भी पढ़ोगे, मैकियावेली. Machiavelli says, if you do favors on somebody, then do it gradually, ठीक है, so that he tastes little, and then so more craving will come. But if you want to punish somebody, then crush him completely. मारना है तो एक ही दिन मार दो, ठीक है. क्योंकि किसी को पनिशमेंट किया तो उसके अंदर फीलिंग ऑफ रिवेंज आती है. तो यू शुड नो द यूज ऑफ फोर्स, हाउ टू यूज फोर्स. तो फोर्स के ही दो, या पावर के दो डायमेंशंस हैं, सॉफ्ट एंड हार्ड. सॉफ्ट में कैरेट्स, हार्ड में स्टिक. स्टिक जब भी लगाओ तो ऐसा लगाओ, ठीक है, कि वो खत्म. और फेवर्स देने हैं तो ग्रेजुअली देने होते हैं. एक दिन में फेवर दे दोगे, फिर नेक्स्ट दिन और कुछ और मांगेंगे. तो ग्रेजुअल रिफॉर्म्स एट यूनियन, नथिंग वाज डन एक्सेप्ट एक्सपेंशन. Some reform, it will give the impression, okay, you have introduced bicameral legislature, maybe in the next reform they are going to offer something, ठीक है. What should I explain? Bicameral. What, where? Bicameral legislative assembly. It also had nominated members. Nominated members हो गए, राय बहादुर. ऑफिशियल मेंबर्स हो गए, ब्रिटिश ऑफिशियल्स, प्लस इलेक्टेड. तो ये तो हो गए डायरेक्टली इलेक्टेड. डायरेक्ट इलेक्शन स्टार्टेड इन 1909
but electorate was limited. Each time increased the size of the electorate. तो जैसे इलेक्टोरेट का साइज बढ़ा रहे हैं, more number of people getting right to vote, at the same time they are dividing Indians. ठीक है, तो अब 1909 only Muslims, 1919 all other communities, so they got directly elected. Okay, Council of States, now I remember, Council of States, the members are elected from the provincial legislative assemblies plus nominated members from princely states etc. ठीक है, तो ये असेंबली से आ रहे थे. Got it? हाँ? Yeah, you can say like Rajya Sabha election, the members of the legislative assemblies were electing. Yeah? ये तो nominated हो गए. I just it got slipped कि ये कहाँ से आए थे. Council of States यहाँ से आ रहे थे. Now it is clear. So these members are part of the council of states as well as provincial legislatures. See, princely states. See, these are nominated member. You can nominate from anywhere. Okay. So main thing was have a nominated members, have those sections in the society who are pro-Raj to balance the elected members. तो दोनों का है, अपने लोगों को भी भर देना है. दिखाने के लिए क्या कर सकते हो, 60 इनके हो गए, 34, 60 में से 34 इधर हो गए, 26 उनके हो गए. Is that clear? तो can they pass a bill on their own? Huh? Is it 50%? तो little bit 1 or 2 extra. Otherwise, it would have been 30-30. They could not have passed. So main nominated member. It was not like a federation where all states were to be represented. Nominated members is those who are chosen by the empire. जैसे हाउस ऑफ लॉर्ड्स में इतने सारे नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं. नॉमिनेटेड मेंबर्स होते कौन है, जो तुम्हारे फेवरेट्स हैं. नॉमिनेशन एक तरीके का स्पॉइल सिस्टम होता है ना, अपने फेवरेट्स जिसने हमें पैसा दिया इलेक्शन में, तो उसको ले आते हैं. ठीक है, तो ये कोई फेडरेशन नहीं है कि प्रिंसली स्टेट्स का इतना रिप्रेजेंटेशन है. इज दिस क्लियर? So only this much changes. Now diarchy I was explaining. Analysis of the working of diarchy. So first point तो यही है, right? Right. In real terms, there was no responsible government. In real terms, there was no responsible government at the provinces. ठीक है, अब why no responsible governments, right? Point number 1, both viceroy and governors had overriding powers. In the sense, ministers will have to take permission. If they want, they can reserve a bill. There is no federation. It was just an act of devolution. So Governor General can take it back. Governor
without governors, तो ultimately what, बिल्कुल दिल्ली गवर्नमेंट को ध्यान में रखो, no real powers with the ministers, ठीक है। तो एक हेड है लेफ्टिनेंट गवर्नर, उसके ऊपर हेड हो गया प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो अल्टीमेटली ऑल डिस्क्रिशनरी पावर्स वेयर लाइंग विद देम, नॉट विद द मिनिस्टर्स। तो नो रियल रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, दो इन द डिक्लेरेशन दे प्रोमिस्ड दैट एट प्रोविंशियल लेवल प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन ऑफ द रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, ठीक है, फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट, second argument is no principle of collective responsibility. Full stop. Ministers were individually responsible towards the governor. Okay. So ultimately just a false consciousness of a popular or a responsible governance. This much you have understood. Now एक question लिखो, right? Examine the working of diarchy. ठीक है, right? Diarchy was introduced in the manner that it was bound to fail. ठीक है, अब लिखो why. First point number 1, right? The functions of the governments cannot be treated as watertight compartments. Comma, there is bound to be so much interdependence. Okay, you cannot have the government like this. Is this clear? तो सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट कहीं का भी हो, all are to be together. Now second point, एक तो प्रिंसिपल ही गलत है, you are dividing, and second thing, you are dividing in such a manner, means you are dividing reserved and this, but in a very unscientific manner. जैसे एग्रीकल्चर, इरिगेशन फिर एक साथ दे सकते थे। पहली बात तो इट इज रॉन्ग टू डिवाइड द फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट, इट कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू वाटर टाइट कंपार्टमेंट। सेकेंड थिंग, ओके यू डिवाइडेड, but purposefully it was divided in the manner that it was bound to fail. Is this clear? Second point, right? Purposefully functions were divided in the manner that was completely illogical and bound to fail.
For example, agriculture was the transferred subject, and irrigation was the reserved subject. ठीक है, अब पहली बात तो डिवीज़न गलत है. डिवीज़न मान लो कर रहे हो तो कुछ सोच समझ के करो. अब सोच समझ उल्टी दिशा में चल रही. ठीक है, चलो डिवीज़न कर भी दिया तो फॉर रनिंग इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट दैट द टू sections they develop a trust over each other. So that was altogether missing. There was no trust on the part of ministers towards officials or officials towards minister. No arrangement so that the trust can be built. ये समझ में आया? So next third, right? Right? Any such, next point लिखो, any such arrangement can work only if special efforts are taken to develop the trust between the two halves. Full stop, right? There was no such effort. Next, right? The two halves of the government were not only disjointed but were working at disjointed to थे, but we are also working at cross purposes. Cross purposes. ठीक है? Right? Ministers were working to further the interests of the colonial further the interest of the countrymen, whereas bureaucracy was to further the interest of colonial masters. तो एक एक्सप्लॉयटर दूसरा एक्सप्लॉयटेड सब कॉन्ट्रडिक्टरी चल रहा है. ठीक है? नेक्स्ट लिखो. राइट मिनिस्टर्स फेस्ड lot of problems because of first lack of control over finances, next lack of cooperation on the part of bureaucracy,
Next, answerability to two masters. First, governor, and second, assembly, legislature. Governor and the legislature. Pardon? They were? लेकिन अब असेंबली वाले पूछेंगे तो क्वेश्चन, मेंबर तो वहीं के हैं. Assembly, through assembly, the electorate, but they were Indians, to be elected by Indians. So now they could not just appease the governor. ठीक है? So though collective responsibility was not there, but still they would have to answer the questions raised by the assembly, and assembly was already given power to raise the questions. ठीक है? तो कोई चीज़ एकदम आइडियल सेंस में नहीं है, लेकिन है तो बहुत बड़ा कंफ्यूजन है फॉर द मिनिस्टर्स. ठीक है? सो इफ देर इज such a system, obviously things are going to fail. ठीक है? Right? Hence, diarchy was bound to fail. अब लिखो, was there any achievement of Government of India Act, या anything good in Government of India Act? First thing is, gave opportunity to the Indians to get first hand knowledge and experience in the functioning of the government. Second, it broke the myth that Indians are not fit to rule. Next, Indian public opinion could be expressed these are the three things. And right, वो तो सभी एक्ट के लिए कह सकते हो. A learning exercise that will be utilized at the time of the formation of the constitution, but फिर भी at the time of Delhi तो they have not used it like that. So is there any change in the mentality of the colonial government and post-colonial governments? सेम है. पावर में आने के बाद सब वैसे ही हो जाते हैं. ठीक है? तो कोई फ़र्क है? कोई फ़र्क नहीं है. पहले भी जो होता था वही अभी भी सब सेम, एवरीथिंग इज सेम. ठीक है? सो नाउ जस्ट राइट assessment या opinions on diarchy. Opinions on diarchy.
Yeah, you can write views of any Besant. Any Besant. Right. Diarchy was unworthy. To be unworthy. To be offered by British and to be accepted by Indians. ठीक है. Now you write Muddiman Committee. MUDDIEMAN. Committee. 1924. मुद्दिमान कमेटी. एलेक्जेंडर मुद्दिमान. पूरा नाम लिख लो, अब तो पूरा नाम भी पूछने लगे. एलेक्जेंडर मुद्दिमान कमेटी. MUDDIEMAN. Right. Right. The committee was set up to examine the working of diarchy. ठीक है. राइट. इनके क्या ऑब्जर्वेशंस थे? राइट. Right. There was no meaningful reform. Next point, no real division of authority. In terms of reserved and transferred subjects. As even on the transferred subjects क्या लिखा है? Even. Right. There was a de facto control of governor. De facto control of governor. Right. Next, there was lack of cooperation. On the part of bureaucracy. And no effective dialogue between the governor and ministers. अब इसमें जस्ट लिखो सम अदर चेंजेस, जैसे प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से सम अदर चेंजेस इंट्रोड्यूस्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट. कौन सा? गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट. सम अदर चेंजेस
introduced by the act. इसमें extension of separate electorate, to other religious communities. Including reservation for depressed classes, reservation for backward classes in Madras province, and nomination of depressed classes in Madras province. All India में तो बाकी all religious communities, but Madras में ये भी change कर दिया. No separate electorate, nomination for depressed, reservation for backwards, but only in Madras. Was proposed by Ramsay MacDonald. अच्छा, separate electorate for Sikhs, Muslims, Anglo-Indians, ठीक है, Parsis, तो बाकी religious communities के लिए था. Dalits separate electorate was proposed but rejected in Pune Pact. But Madras में they started nomination. इससे आया रिजर्वेशन फॉर वुमेन तो 1935 में था. राइट टू वोट आई डोंट नो. You read somewhere right to vote. They must have introduced from the beginning. That's a different thing. But when women got right to vote, that I don't know. Now write other changes which were introduced. First, you have written this. Next is creation of the office of High Commissioner. Creation of the office of High Commissioner. And transferring some of the functions of the Secretary of State to the office. कुछ कमिश्नर को फंक्शंस दे दिए. नेक्स्ट, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन. सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन. अब इसमें एक दो एनालिसिस हैं. जीएस में कोई स्कॉलर के नाम की ज़रूरत नहीं, इसलिए ऐसे ही लिख लो. ये एक अच्छा एनालिसिस है. जस्ट ओवरव्यू ऑफ द एक्ट. ओवरव्यू ऑफ द एक्ट मतलब कहीं भी क्रिटिसिज्म लिखोगे तो ये काम आ जाएगा. राइट. Its biggest problem was that it was limited by
the idea of the protection of the British interests in India. Full stop. अब ये डिफरेंट स्कॉलर्स के ओपिनियंस हैं. नेक्स्ट पॉइंट में भी लिख सकते हो, कहीं इस आंसर लिखने में काम आएगा. फिर लिखो इट्स फ्लॉ वॉज दैट it had ideological roots in British colonialism. Next, right, it was a strategic move by the British to contain nationalism. यहाँ पे ऐसे नोट करके लिख लो. However, it has intensified anti-Raj, right inverted commas, Raj, British Raj को Raj word, Raj, yeah, anti-Raj feelings. समझ में आ गए? अब एक क्वेश्चन लिखो इसके ऊपर. Write the question. The scheme of diarchy was cumbersome. Question लिखो. The scheme of diarchy was cumbersome. CUMBERSOME. Cumbersome, comma, complex, the scheme of diarchy was cumbersome, complex, confused, comma, had no logical basis, comma, rooted in compromise. Rooted in compromise. Rooted. इसके आगे लिख दो क्रिटिकली एग्जामिन. अब क्रिटिकली एग्जामिन सुनते ही डर लगने लगता है. ये आंसर तो हो जाएगा. The scheme of diarchy was cumbersome, confused, complex, rooted in what? Had no logic. लिखो इसका आंसर, खुद ही लिखो. You know diarchy. You find it was cumbersome. Why cumbersome? No coordination, no scientific division of the subjects. Confused. Two masters. Who has? Complex. Okay, no proper division. वही हो गया cumbersome, complex. Literally वैसे भी नहीं लिखना है, थीम लिखना है. Illogical,
Why it was illogical? You cannot divide the subjects into watertight compartment. And rooted in compromise. Which compromise? Huh? Rising tide of nationalism. And Britishers thought that by giving some carrots, they will be able to challenge or manage the challenge. And they thought that perhaps through this method, they will be able to incorporate the pro-British section, and they will project them that they are representing the voice of Indians. ठीक है? तो इसमें सब लिख सकते हैं. It was rooted in the ideological project, and it was to protect the colonial interests. तो आंसर आ गया समझ में? लिखो. हंसने के लिए नहीं बोला है. अलग पेज पे लिखो, दे देना वो, क्योंकि वो ऐसा तो लिखोगे नहीं कि कॉपी में रखे नहीं लायक होगा. ठीक है, एक अलग पेज में लिख देना. सब कुछ पता है ना, नोट्स में भी है, अगर कॉपी करना है तो कर सकते हो. ठीक है, 10 मिनट्स में लिखो. You can have open book exam, no problem. You can see and write. हम लोग ने जो 909 वाला आंसर लिखा था उसमें वो लिखना चाहिए था, ड्रैगन टीथ वाला कुछ. देखा क्या था? ड्रैगन टीथ. अच्छा, वो कोई आए अगर वैसे तो डाल देना, मतलब वहाँ पे. दैट्स अ गुड स्टेप.
तुम लोग कॉपी में देख क्या रहे हो? कोई आंसर कॉपी में देख के बनेगा ही नहीं। कैसे आंसर कैसे लिखना होता है? सोच के लिखना होता है। इसीलिए ओपन बुक एग्जाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, और टाइम चला आता है कि एक बार। जितना टाइम तुम देखने में लगा रहे हो, सोचने में लगाओ। जो लोग कॉपी में देख रहे थे कभी नहीं लिख पाएंगे, बता रहे। बिकॉज आंसर इज इन माइंड, आंसर इज नॉट इन कॉपी। एंड टू नो, टू राइट आंसर यू नीड टू अंडरस्टैंड, नॉट नोइंग। नोइंग इज नॉट इनफ। क्या था, तुम्हारा इन्वॉल्वमेंट कितना था उसको समझने में। तो एक बार करने के बाद कितनी बार भी देखोगे उसमें कुछ नहीं होने वाला। यू हैव टू अंडरस्टैंड इन द क्लास। तो थोड़ा अपने दिमाग का भरोसा। इट वॉज cumbersome, complex। हो गया 10 मिनट्स। कल से क्लॉक लगा देंगे। यू गॉट देन। वैसे तुम्हारे हिसाब से कैसा लिखा है? ठीक लिखा है? अभी इन लोग से इवैल्यूएट कराता हूँ। ठीक है।
How many marks you are expecting out of 10? 4? 3? Huh? 3.5 point. ठीक है, पॉइंट क्यों लगाया तुमने? अच्छा, मतलब तुम खुद को 4 देने वाले थे? 4 0.5 कम कर दिया, ओके फाइन। फिर भी ठीक है, योर एफर्ट इज गुड। Who thinks who has written a very good answer? कोई ऐसा है जिसको लगे अब मेरा आंसर अच्छा है? कितने लोग ऐसा आंसर है? ठीक है, 5। और बाकी लोग ढूंढ क्या रहे थे कॉपी में? अभी तो डिस्कशन किया है हम लोगों ने। ठीक है, तो who has given this? How is your answer according to you? हाँ, तो तुम कितना मार्क्स देने वाले हो अपने को? पूरे दे दोगे? अच्छा, फाइन। सो नाउ पहली बात तो जो आंसर नहीं लिख पा रहा, वो क्यों नहीं? वाई यू आर नॉट एबल टू राइट? व्हाट प्रॉब्लम यू फेस्ड? आंसर इतना सीधा साधा है। द स्कीम ऑफ डायरकी वॉज कम्बरसम, कॉम्प्लेक्स, कंफ्यूज्ड। मतलब डायरकी की प्रॉब्लम। तो आंसर क्यों नहीं लिख पा रहे थे? वॉट यू वेयर थिंकिंग? कुछ आ नहीं रहा था, दिमाग वॉज गेटिंग ब्लैंक। हाँ, क्यों ब्लैंक? वाई माइंड इज गेटिंग ब्लैंक? Answer does not mean you have to remember the facts, ठीक है, and dump the facts. Facts are always to support what you want to write. तो एक तो mind blank होता है when we try to remember the facts. अब इसको steps one by step, why you have not moved? कुछ इंट्रोडक्शन भी नहीं समझ में आया था। डायरकी वॉज कम्बरसम, कॉम्प्लेक्स, कंफ्यूज्ड। व्हाट कुड हैव बीन द इंट्रोडक्शन? ये है क्या? दिस क्वेश्चन इज व्हाट? क्रिटिसिज्म ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. व्हाट यू हैव रिटन? In the backdrop of growing militant nationalism, dissatisfaction from the masses, World War I contribution to other facts, Jallianwala, and advent of Mahatma Gandhi in the Indian politics. Okay, but I think so many events were not required. Enough if you write. Huh? ठीक है, तो इंट्रोडक्शन तो लिख ही सकते थे। इंट्रोडक्शन हो पाया तुम लोगों से? सब लोगों से हुआ? ओके, इंट्रोडक्शन के बाद हाँ, यस। Hierarchy was introduced by British Government of India Act 1919. It was basically a sugar-coated slow poisoning of nationalist aspirations of Indians, that is rule on Indians by the Indians. No, it is too much sugar. ठीक है, इतना भी शुगरी नहीं, थोड़ा सा डिसेंट वाले में रहना है। बिल्कुल वैसी भी लैंग्वेज नहीं यूज करनी है। या यू कैन कोट एनी बेसेंट के कोट से स्टार्ट, इन द सेंस कोट ऊपर लिख सकते हो और फिर इंट्रोडक्शन कर सकते हो। तो इनका कॉपी करो, बेंच मार के आप बोलते हो। तुम्हारा एक वर्ड है ना, इन द बैकड्रॉप, ठीक है। तो डायरकी वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द बैकड्रॉप ऑफ द ग्रोइंग nationalist sentiment and or in the context of the political
environment that was prevailing with ideological roots in the British colonialism and with the ultimate aim of protecting the interests of the British. ठीक है, सो ये हटा दें इसमें से, तो लिखो पहले इंट्रोडक्शन. ठीक है, बट एटलीस्ट यू अप्लाइड प्रेजेंस ऑफ माइंड. I also thought I'll give 2.5. ठीक है, 2 to motivate you, 0.5 sorry you. लेकिन ठीक है, you could link, मतलब expression, there's a lot of things to be improved, but expression से link किया तुमने, that's a good thing. तो बैकड्रॉप में ही सारे एक्ट के आंसर तो लिख ही सकते हैं, कीवर्ड मिल गए. ठीक है, तो इंट्रोडक्शन लिख लो. डायरकी वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द बैकड्रॉप ऑफ द एग्जिस्टिंग डोमेस्टिक political environment, comma, getting charged with anti-British feeling, because of the attitude of British government towards the concerns of Indians. पूरे circumstances ये सब लिखने की जरूरत नहीं. ठीक है, the concerns of Indians, या ऐसे भी लिख सकते हो, लैक ऑफ सिंपैथी, एम्पैथी, कुछ भी. अब नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या, एक इंट्रोडक्शन तो लिख लिया करो कम से कम. ये तो कीवर्ड मिल ही गया, बैकड्रॉप. ठीक है, तो 3 लाइनें तो बन गई. फिर अब आगे सोचेंगे किससे 3 लाइनें भी नहीं लिखी गई. इंट्रोडक्शन तो लिख पाए तुम लोग, दिखाओ. यू रियली रोट द इंट्रोडक्शन. Read your introduction. इंट्रोडक्शन लास्ट में लिखते तुम. फर्स्ट लाइन बस पढ़ दो, क्या लिखा तुमने. हाँ, that is also a good introduction. You can write to the point also that government of, because the question is on diarchy, I think this is also a better introduction. ये भी लिख सकते हो, और ऑल्टरनेटिव इंट्रोडक्शन लिख दो, ये ज़्यादा अच्छा हो गया. ठीक है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट इंट्रोड्यूस्ड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 इंट्रोड्यूस्ड a highly controversial system of government known as diarchy. ये ज़्यादा अच्छा है, वर्ड लिमिट में टू द पॉइंट हो गया. नाउ अब क्या लिखना चाहिए. एक्सप्लेन करना चाहिए. यस, यू वांट टू से. You can write in the conclusion, not in introduction. This is a good introduction. Introduced a highly controversial system known as diarchy. So it is like no nonsense introduction. ठीक है, ये ज़्यादा अच्छा है. आगे क्या लिखोगे.
क्योंकि बैकड्रॉप में थोड़ा फिर भी नॉनसेंस है कि नहीं चाहिए. दिस इज वेरी गुड इंट्रोडक्शन. चलो और आगे. देन यू विल एक्सप्लेन द डायरकी. और शुड बी लिंक विद दिस. नहीं, इससे लिंक करो ना. हाईली कंट्रोवर्शियल कॉन्सेप्ट डायरकी. ठीक है, फिर उसी के फ्लो में लिख दो इट वॉज क्रिटिसाइज्ड एज, बजाय कि पहले डायरकी पढ़ाओ फिर उसके बाद नहीं. इसी से आंसर लिंक करो. इट वॉज क्रिटिसाइज्ड एज टू कॉम्प्लेक्स, cumbersome, illogical, and arbitrary. तो कोई ज़रूरी नहीं पूरा लिटरल. ठीक है, अब क्या एक्सप्लेन करेंगे? हाउ एंड वाई. तो इससे पहले थोड़ा सा डायरकी का प्रोविजन. ठीक है, तो राइट, डायरकी मेंट dual government. Right, it was experimented at the provincial level. Right, provincial subjects were divided into the transferred and the reserved. Right, more important subjects were reserved, where the power was with the governor and bureaucracy and the officials. Right, not so important subjects were placed under the transferred one, where the laws to be made by governor on the basis of aid and advice of the ministers. अब लिंक कर दो why it was cumbersome. Right, next, though the declaration of Montague promised the intention of introducing the responsible government comma, diarchy was rooted in
the colonial interests rather than in the interest of the countrymen. Right. It was an altogether a flawed scheme. Flawed, F-L-A-W-E-D, flawed scheme based on illogical principles. Right, next paragraph. Right. The division of the subjects was arbitrary. And the two halves of the government neither had the required trust on the other hand working at cross purposes. Cross purposes, right? Ministers had dual accountability, comma, one towards the governor and the other towards the legislature. Right, next paragraph. Right, contrary to the views of British, contrary to the कह सकते हो calculations of the British, काउंसिल ऑफ नहीं, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल से थी, लोकल में तो डुअल नहीं था ना. राइट, व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग? और हमेशा अकाउंटेबिलिटी लोअर हाउस को ही होती है अगर हो भी तो. जो लोअर हाउस होता है ना उसी को अकाउंटेबिलिटी होती है. क्या लिखा है? कॉन्ट्ररी टू द कैलकुलेशन ऑफ द ब्रिटिश, कॉमा, डायarchy, instead of pacifying Indians, aggravated the anti-Raj feelings, aggravated the anti-Raj feelings, anti-Raj, British Raj feeling. Right, even the Muddiman committee which was set up to review highlighted the complex and the cumbersome nature. Right. Annie Besant was right when she said that comma, it was neither worthy on the part of the British to give and nor worthy
on the parts of Indians to accept. ठीक है, अब इससे क्या दिक्कत कहाँ पे आती है? क्या दिक्कत आती है? कभी आंसर लिखा ही नहीं है? वही तो मेंटल एक्सरसाइज करनी पड़ती है ना, थिंकिंग करो बहुत ज्यादा। तुम लोग रोज आते हो ये किताब पढ़ लें वो किताब पढ़ लें, किताब पढ़ने से कुछ नहीं होता। आंसर इज नॉट इन योर नोटबुक्स, आंसर इज इन योर माइंड। डू द मेंटल एक्सरसाइज। तो तुम अपनी भाषा में लिखो, पहले लिखो ना, वो तो लैंग्वेज है ना। तुम भाषा में किसी भी भाषा में लिखो, लेकिन मेन क्या है? ऑर्गेनाइज। हमारे पास ये रिसोर्सेज हैं, मेरे पास बुद्धिमान कमेटी के बारे में पता है, कैसे मुझको इसके अंदर डालना है। यू इंक्लूडेड दैट इन योर आंसर। तो थिंकिंग यू हैव टू स्टार्ट, अदरवाइज पढ़ते जाओगे सिलेक्शन थोड़ी होगा। तो मेहनत भी करने, जब तक सोचना स्टार्ट ही नहीं करोगे। अब मैंने 2 आंसर लिखा है ना, फिर घर पे जाके यही लिखो। अगर 10 टाइम्स यू विल अप्लाई, और जैसे मैथ्स करते हैं ना सॉल्व, वैसे ही आंसर लिखते हैं। ये इसी हम तो स्ट्रक्चर भी बताते हैं कि इंट्रोडक्शन लिख लो, अब बॉडी लिख लो, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है, वरना पढ़ के कोई फायदा नहीं है। ओके, या फाइन, सो we'll complete it tomorrow. Yes.